Hello student, in this video lecture we are going to discuss about the some terminology which we are used to define the anatomy and physiology. In this we are discussing about the anatomical terminology. So once you understand the basic words or we can say the root words that helps you to understand easy to understand what the anatomy sentence want to say. Okay, first of all, we are going to discuss about some anatomical position related terminology. In this, you can see in your notes anatomical position such as the it is refers to the body. It is refers in anatomical position the subject is standing when it is erect position. जब कोई सामने की तरफ अपने दोनों हाथ करके खड़ा होता है, you can see in your diagram, it is the anatomical position, proper anatomical position, and it is dorsal anatomical position. ठीक है? So these are the anatomical position. It is from the front and it is from the back. You can see in this diagram from the front you can just define that it's your head, it's your thorax region, abdomen, pelvic region, lower limbs and upper limbs. From the back, it's your back, that is also called the dorsal surface. These are the buttocks area or lower limb and neck. So this is the anatomical terminology regarding the positions. Next one, directional terms. That's are very easy if you understand once, such as superior. That means towards the head. You must see in your notes, towards the heads, that we call the superior. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, द लेग्स इज सुपर टू द फुट. आपके जो लेग्स होते हैं, दीज आर सुपीरियर टू द फुट. inferior, that means towards the feet. that में एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, the foot is inferior to the legs. anterior मतलब in front. towards the front part of the body, it is called the anterior. Such as example, the nose is anterior to the ears. Okay. Posterior, that means towards the back of the body. The ears are posterior to the nose. यहाँ हम एक एग्जाम्पल के साथ भी समझ रहे हैं जो कि ईजी रहेगा समझने के लिए. नेक्स्ट वन आता है मीडियल. दैट मीन्स टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी. Here you can draw such a imaginary line. बॉडी को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं. इमेजिनरी लाइन होती है, ये इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं मीडियल लाइन. ठीक है, तो टुवर्ड्स द मिड लाइन जो होगा दैट इज मीडियल, और अपार्ट फ्रॉम द मिड लाइन होगा उसको हम बोलेंगे लेटरल. ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं. टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जैसे नोज इज मिडल टू द आईज. ठीक है, लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन जो दूर होगा, जैसे आईज आर लेटरल टू द नोज. Okay, once you understand these terms, that is so easy. These are also called the root terminology. Next one आता है proximal. मतलब near, towards the trunk of the body or the attached end of the limb. जैसे हम कह सकते हैं shoulder is proximal to the wrist. जहाँ से जो अटैच पॉइंट है उससे बात करेंगे हम, बॉडी की तरफ वाले पार्ट की बात करेंगे. जैसे हम कह सकते हैं कि आर्म्स जो हैं वो रिस्ट से पास में है, प्रॉक्सिमल है. ठीक है, डिस्टल अवे फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी और द अटैच्ड पॉइंट ऑफ द लिम्ब. ठीक है, रिस्ट इज डिस्टल टू द फोर आर्म. रिस्ट इज डिस्टल टू द फोर आर्म. ये एक एग्जाम्पल है.
फोर आर्म से रिस्ट ज़्यादा दूर होती है, ठीक है। रिस्ट डिस्टल का मतलब जो जॉइंट पॉइंट है बॉडी से जहाँ पे लिम्फ जुड़े हुए हैं उससे दूर का हिस्सा डिस्टल और पास का हिस्सा प्रॉक्सिमल, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल दैट मीन्स नियर द सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है। द रिब्स आर सुपरफिशियल टू द हार्ट। एक एग्जाम्पल बताए यहाँ पे। डीप का मतलब होता है दैट्स मीन्स जो सरफेस से जितना दूर होगा उसको हम बोलेंगे डीप। द बॉडी द हार्ट इज डीपर टू द रिब्स। जो रिब्स हैं वो सुपीरियर हैं और हार्ट उसके डीप साइड में है। एक आता है पेरिफेरल। अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी इट कॉल पेरिफेरल। जैसे पेरिफेरल नर्व्स which are radiant away from the brain and spinal cord. So these terminology help you to understand anatomy and physiology in a better way. Next one आता है body parts regions. Basically your skeleton, or we can say your body parts, may be divided into two parts: axial body part and appendicular body parts. You must seen in this diagram एक्सियल बॉडी पार्ट दैट मीन्स जो मिड पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉडी पार्ट। ये जो ग्रीन आपको इस सेट में दिखाई दे रहा है फर्स्ट डायग्राम में, जो ग्रीन कलर में है दैट इज एक्सियल बॉडी पार्ट। और अपेंडिकुलर बॉडी पार्ट जो कि एक्सिस से जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे हेड छोड़ दो, रिब्स छोड़ दो, वर्टिब्रा छोड़ दो, उसके अलावा जो पार्ट बच गया उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर पार्ट, ठीक है। अपेंडिकुलर रीजन, ये देखो एक्सियल बॉडी पार्ट इट इज द पार्ट ऑफ बॉडी नियर द एक्सिस ऑफ बॉडी। जो सेंटर होता है उसके पास में होता है। दिस इंक्लूड्स हेड, नेक, थोरैक्स, चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विस। Appendicular body parts, it is the part of the body out of the axial line. This includes the upper and lower extremities. Thank you very much. If you have any doubt, you can ask me anytime. Thank you very much.